So in this class of RCC and pre-stress, we'll be starting with some basics. Now, what exactly RCC is? You have understood, you have heard about RCC. RCC means this is reinforced cement concrete. This is reinforced cement concrete. This reinforced cement concrete is basically made up of two things, reinforced and cement concrete. Reinforcement means steel. This reinforcement means steel. And cement concrete means the concrete which is having cement as a main material. The cement concrete is having three components. This is cement plus sand plus coarse aggregate. The cement plus sand plus coarse aggregate. You have three different components here. Now, why the steel is provided with the concrete? The reason is that the steel is having strength in tension. Steel is having strength in tension. And the concrete is having strength in compression. It means that concrete की जो strength होती है वो compression में अच्छी होती है, but tension में बहुत कम होती है. इसलिए कंक्रीट को टेंशन में सपोर्ट करने के लिए कि अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस कहीं पे आ रही हैं तो कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड द स्टील की स्टील को मैं प्रोवाइड कर देता हूं, कंक्रीट को हेल्प मिल जाएगा. द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन और द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज M20, M30, M25 like this, where M stand for the mixture of cement, sand and aggregate, and this 30 or 20 stands for the characteristic strength. This characteristic strength. Now the characteristic strength is that strength below which only 5% of the test result are expected to fall. Results are expected to fail. मतलब what you do is that you consider a cube of dimension 150 mm. You just test that cube for the compressive strength. उस पे compression लगाते हो, जितनी वैल्यू पे जाके वो क्यूब टूट जाता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है. It means that for M20 concrete, if you are considering the characteristic strength, then the strength will be 20 Newton per mm square. इतना particular load पे वो टूट जाएगा. This is the maximum compressive strength of the concrete cube which you have prepared for the testing. Now what you do is that you just arrange the different tests. अलग अलग क्यूब लेते हो, अलग अलग टेस्टिंग करते हो, सारे जगह पे अलग अलग स्ट्रेसेस की वैल्यू आती है जिसको वो टूटता है. उन सारी वैल्यूज को यूजर्स अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. फॉर एग्जांपल 10, 15, 20, 21 ऐसे करके you just remove the 5% of the test results. Then the value which you will get, this is the characteristic strength, which is the actual strength of the concrete in compression. Similarly for steel also the characteristic strength is defined, but it is defined in the case of tension for the steel. And for the steel, the characteristic strength is like for the steel Fe415, this is 415 Newton per mm square. For mild steel, this is 250 Newton per mm square. For different types of steel, the characteristic strength for the steel is defined in tension, but not in compression. Concrete के लिए compression में बात करते हैं कि concrete की compressive strength होती है. This characteristic strength in compression for the concrete is denoted by FCK, and for the steel it is denoted by FY. This is the characteristic strength. This is the maximum strength which that particular material can handle. There is another stress which is known as permissible stress. Permissible stress, or you can say the yield stress. For concrete, it is denoted in two different cases. देखो concrete का maximum strength होता है compression में. The compression can be direct compression, सीधा सीधा compression दे दिया उसको. The compression can be bending compression, bending की वजह से compression दे दिया. हमें एक चीज पता है, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्ट्रेसेस दोनों चीजें डेवलप होती हैं कंक्रीट के अंदर. अगर बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है तब भी, इफ यू आर ट्राइंग टू बेंड द बीम, इफ यू आर अप्लाइंग अ सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इन द बीम, देन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेसेस. इट मींस दैट द कॉम्प्रेसिव एंड द टेंसाइल स्ट्रेसेस व्हिच आर बेसिकली द नॉर्मल स्ट्रेसेस, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बेंडिंग मोमेंट आल्सो, एंड दे कैन प्रोड्यूस डायरेक्टली आल्सो. सीधा सीधा कंप्रेशन लगाओ तब वो डायरेक्ट कंप्रेशन हो गया. अगर बेंडिंग के थ्रू लगाओगे तो वो बेंडिंग कंप्रेशन होगा. दिस विल बी बेंडिंग कंप्रेशन. अगर डायरेक्टली लगाओगे तो डायरेक्ट कंप्रेशन होगा. इट मींस दैट द compressive strength of the concrete can be defined in two different ways, the strength in direct compression and in bending compression, क्योंकि उसमें बेंडिंग की वजह से भी कंप्रेशन आ रहा है. If it is denoted in direct compression, then it is denoted by sigma cc. Otherwise, it is denoted in bending compression, it is sigma cb. This is bending compression, it is direct compression. Fine. ये हो गया आपका कंक्रीट की बात.
कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, जो मैंने एफसी के बताया, इसी में एक और स्ट्रेंथ डिफाइन की गई है, दैट इज द मीन स्ट्रेंथ, विच इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच ओनली 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच 50% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड टू फेल। मीन मतलब बीच वाला स्ट्रेंथ। इट मीन्स दैट 5% टेस्ट रिजल्ट एफसीके के नीचे फेल हो रहे हैं, 50% टेस्ट रिजल्ट एफएम के नीचे फेल हो रहे हैं। इसका मतलब एफसीके और एम के बीच का जो पोर्शन है वो सेफ्टी पोर्शन है। यहां पे आप एक चीज ये बोल सकते हो, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एफसीके प्लस 1 एफसीके प्लस 1.64 सिग्मा। इसका मतलब टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज एफसीके प्लस 1.64 सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, which is the standard deviation. Sigma is the standard deviation. The standard deviation का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो this is the mean value, this is FM, this is the mean value. Fine. अब इस mean value से बहुत सारे टेस्ट रिजल्ट किया आपने. This is FCK1, ये यहाँ आया. This is FCK2, ये यहाँ आया. This is FCK3. सारे टेस्ट रिजल्ट की अलग अलग वैल्यूज है, सबकी अलग अलग वैल्यू आ रही है जो मीन से कुछ डेविएट हो रही है. अगर ये पूरा एवरेज डेविएशन निकालते हो, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन, विच इज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू, विच इज सिग्मा. Now, if you want to calculate the FM value, which is equal to FCK plus 1.64 sigma, मतलब FCK में 1.64 sigma वाला portion plus कर दोगे तो आपको FM मिल जाएगा. This is the value of target mean strength. There, sigma is the standard deviation which depends upon the type of concrete. The sigma has a value depending upon the type of concrete. For M20 or 25 concrete, for M20 or M25 concrete, this sigma is denoted by 4 Newton per mm square, standard deviation. For M30 and above values, for M30 and above, this is 5 Newton per mm square. It means that if someone is asking you to calculate the target mean strength for M25 concrete, then this will be FM is equal to M25 में FCK is 25. This is 25 plus 1.64 into 25 के लिए 4 into sigma. Sigma मतलब यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 1.64 sigma की जगह 4. You will get the value of the target mean strength below which only 50% of the material will be expected to fall. Below which 5%, then it is FCK only. Now, ये तो हो गया target mean strength और characteristic strength की बात. अब बात करते हैं elastic modulus की. The another term is elastic modulus. Elastic or modulus. The elastic modulus for the concrete is basically denoted by EC is equal to 5000 under root of FCK by Indian Standard Code 456 revision 2000. Earlier, the code was IS 456 1978 version, and according to this version, this value is 5700 under root FCK, but it is now 5000 under root FCK. तो अभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, then you will use this relation only. EC is equal to 5000 under root FCK. Until and unless they will specify you have to use 1978 version. This elastic modulus of concrete is basically known as initial tangent modulus. This is known as initial tangent modulus. देखो, the Young's modulus can be described into 3 different ways. The Young's modulus can be described into 3 different ways. अलग-अलग तरीके से आप उनको बोल सकते हो. For example, पहला होता है initial tangent modulus. This is initial tangent modulus. This is the first, which is basically the slope of stress and strain curve up to the proportional limit. Up to the proportional limit. जैसे for example, if you have a graph, this is our graph. इस स्ट्रेन का ग्राफ बना लेते हैं. This is a graph. Now, on this axis there will be strain, on this axis there will be stress. This is strain and this is stress. Now you have a graph like this. For example, we have a graph like this. इसमें ये स्ट्रेट पोर्शन यहां तक है, उसके बाद कर्वेचर आ गया. इट मींस दैट इफ यू हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, व्हिच इज बेसिकली, इसका मतलब यही होता है, दिस इज 5000 अंडर रूट FCK, देन दिस विल बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां तक स्ट्रेट लाइन जा रहा है. इसका अगर आप स्लोप निकालते हो, दिस tan थीटा विल बी द EC, व्हिच इज 5000 अंडर रूट ऑफ FCK, व्हिच इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट. बट इसके बाद कर्वेचर आने लगता है, इसके बाद ये इलास्टिक मॉडुलस नहीं रहता है, ये मॉडुलस बदल जाता है. इट मींस दैट
if you have to calculate the modulus for this particular point P, this is point P, and if you want to calculate the modulus for this point P, then in that case, the modulus will be calculated by just directly calculating the slope up to this point. It means that if you will calculate the slope directly up to this point, this is the direct slope, which is phi. And if you will calculate the slope directly, this is tan phi, up to the point P, then this type of modulus is known as the second modulus, which is known as the secant modulus. This is the secant modulus. Secant modulus means the slope of the curve up to a point from the origin. Directly, if you will calculate the slope, you will get the secant modulus. Fine, this is secant. The third type of modulus is known as tangent modulus. Tangent modulus. The tangent modulus is that modulus which is calculated by directly calculating the slope at a certain point. जैसे ये point है, अगर आप इस पे direct tangent खींचोगे, you will get a tangent and then you will calculate the slope at this point. अगर आप direct इसी point पे if you will calculate the slope, this is alpha. If you will calculate this tan alpha, which is the slope of the tangent at any point, then this will give you the tangent modulus. So basically, you have three types of modulus. One is defined up to proportional limit, and other remaining are defined after the proportional limit. अगर आप directly slope निकालते हो up to the proportional limit, you will get the initial tangent modulus, that is 5000 FCK. Otherwise, secant modulus for a particular point, if you calculate the slope from the origin to that point, that will be the secant modulus. Otherwise, if you will calculate by the slope by drawing the tangent on any point which is not the point in the proportional limit, then the slope at that particular tangent at that point will be the tangent modulus. It is said that the initial tangent modulus is greater than the secant modulus, and which is greater than the tangent modulus. It means the initial tangent modulus is the greatest. This is the greatest. ठीक है. अगर आप Young's modulus की definition देखते हो, if you will see the definition of the Young's modulus, so Young's modulus is basically stress upon strain. It means that what is stress? Stress is basically the internal response. Stress is what? Stress is basically the internal response. It means that the Young's modulus is basically the internal response which is developed inside the body when you are trying to apply a unit strain in that body. It means that if you will try to stretch the body by 1 mm, then the response that the body will develop internally, that is the Young's modulus. That will be the Young's modulus. It means that the response is basically developed inside the body, and the Young's modulus is that particular response for unit deformation in that body. एक term होता है creep. Creep is defined as a continuous deformation under constant loading condition. Continuous deformation under constant loading condition. It means that this will be the deformation which will be a continuous deformation. रोकेगा नहीं, लेकिन load change नहीं हो रहा है, load उतना ही है. For example, एक घर बनाओ, just construct a building, leave it for 50 years, and after that, just come after that to that particular building. उस building पे कोई load मत लगाओ, then building will get deformed due to its own weight, due to its self weight. अब वो continuously उस building में जो weight है, जो bricks लगा है, जो floor लगा है, उसकी वजह से वो constant load है. देखो, load can be of two types. It can be a dead load, it can be a live load. Live load is a variable load. If you are like sitting in a room, you can go out, you can come in. It means that the load is variable. Dead load मतलब उस load उस particular room में जो floor है, जिस room में आप बैठे हो, the floor is dead load. वो कभी change नहीं हो सकता. That will always be remain constant. It means that the creep is basically the deformation that is caused due to the dead load only, not to live load. It is a continuous deformation under constant loading condition. Load should be constant. To denote the effect of creep, there is a coefficient which is known as creep coefficient, which is denoted by phi. Creep coefficient is denoted by phi or theta, whatever you can denote it. This creep coefficient depend upon the age of the loading. कितने time तक constant load उस पे रहा है. Depending upon the age of loading, this creep coefficient has different values. For example, for 7 days, this creep coefficient phi is 2.2. For 28 days, this creep coefficient is 1.6. For 1 year, if you consider for 1 year, then this value is 1.1. Depending upon the creep coefficient, there is a term which is defined as the long-term modulus of elasticity. Long-term modulus of elasticity. That is, EC for long term, this is equal to 5000 under root of FCK divided by 1 plus phi. If you will consider or take the plastic effect also,
देखो इलास्टिक इफेक्ट तो हो गया 5000, प्लास्टिक इफेक्ट मतलब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन वाला इफेक्ट. इफ यू कंसीडर द प्लास्टिक इफेक्ट देन यू हैव टू कंसीडर दिस creep coefficient value. Now, depending upon the age of loading, you can use this value. You can calculate the value of the coefficient elastic modulus, long-term elastic modulus. Fine. अभी हम लोग बात कर रहे थे कंक्रीट के अंदर कि कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन एंड बैड इन टेंशन. तो कंक्रीट की एक स्ट्रेंथ होता है. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. नाउ कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कंप्रेशन में डिफाइंड होती है, बट द टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन आल्सो बी डिफाइंड. तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट can be calculated depending upon the type of concrete, that is based on its characteristic strength or the maximum compressive strength, by using the relation that the cracking strength, इसको cracking भी बोलते हैं क्योंकि कंक्रीट में क्रैक कब डेवलप होगा, जब टेंशन आएगा. It means that the cracking strength will be 0.7 under root of FCK. For example, if somebody will ask you to calculate the cracking strength for M20 concrete, this will be 0.7 under root of 20. From this case, you can calculate the tensile strength. There is another strength which is the main strength, which is the compressive strength of concrete. Compressive strength of concrete. Compressive strength का मतलब क्या होता है? The strength of concrete under compression, which is the maximum. You already know that. So the compressive strength is defined on with the basis of two cases. One is the direct compression, सीधा compression load लगा दिया, direct compression, and the second is bending compression. Direct compression and bending compression. Direct compression का मतलब सीधा compression. Bending compression मतलब the compressive stress which is produced due to bending. In that case, if you are considering the strength of the concrete, then you can draw the table like the type of concrete, the strength under direct compression, the strength under bending compression. We can just draw the table here. Type of concrete means this can be M15, M20, M25 and M30. These are the type of concrete mix और उसका characteristic strength. Direct में इसकी वैल्यू होती है 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. This is 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. This is 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये याद कर लेना, सारा याद करने का जितना बता रहा हूँ सिर्फ होता है. This is 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर. These are the strength of the direct compression. मतलब अगर आप डायरेक्टली लोड अप्लाई कर रहे हो तो आप कंक्रीट पे इतना स्ट्रेंथ तक उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसके बाद नहीं. देखो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है इसका मतलब होता है कि अगर 15 डेवलप हो गया 15 न्यूटन पर एमएम तो टूट जाएगा कंक्रीट. तो यू कैन डेवलप टिल 4 डायरेक्ट कंप्रेशन. अगर बेंडिंग की बात करते हो तो बेंडिंग में यू कैन डेवलप अप टू 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. दिस इज 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फॉर M20. दिस इज 8.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फॉर M25 एंड 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फॉर M30. Under direct compression, this is denoted by sigma cc direct compression. Under bending compression, this is denoted by sigma c bending compression, sigma cbc. These are the values of strength, which are basically the permissible values. Permissible values. देखो दो चीजें होती हैं. One is the final value or the characteristic value. Another is the permissible value. Permissible का मतलब होता है कि इतने वैल्यू तक आपको डिजाइन करना है. Characteristic का मतलब होता है इतना आगे तो टूट जाएगा. These are the allowable values. इतनी वैल्यू तक आप अलाउ करोगे, इसके आगे नहीं जाओगे. दिस इज द केस. इतना आप लेके चलते हैं, मतलब आप अपनी तरफ से एक नॉर्मल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे होते हो. फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब आप एक फैक्टर लेके चल रहे हो सेफ्टी का. लाइक फॉर M15 यू आर कंसीडरिंग, देन यू नो दैट कि 15 वाला टूटेगा कब, जब 15 आएगा. तो इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 15 डिवाइडेड बाय दे कितना रहेगा 5. इट मींस यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 3. Already providing a factor of safety of 3 because you will fix the value of 5 as the final strength, which is the permissible strength. You will not go till 15. This is the case which is the factor of safety. तो यहाँ पे factor of safety आप ऑटोमेटिकली लेके चल रहे हो ताकि 5 तक का लेके डिजाइन करूंगा. एक्चुअल में कब टूटेगा, जब 15 पे जाएगा, तभी तो स्ट्रक्चर सेफ रहता है. अदरवाइज अगर आप उसके लिए डिजाइन करते हो तो टूट जाएगा. आपको समझ में आ रहा होगा. अब बात करते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस की. देखो जैसे आपने यहाँ कंक्रीट पे देखा वैसे ही स्टील की भी स्ट्रेंथ होती है. स्टील इज ऑल्सो देयर. So steel is also having a strength, but the case is that steel is basically having the tensile strength. Tensile strength. Steel is having the tensile strength. अभी स्टील जनरली जो आप यूज करते हो वो स्टील होती है आपकी दो तरीके से. एक होता है माइल्ड स्टील, एक होता है आपका माइल्ड स्टील और दूसरा होता है आपका HYSD स्टील. HYSD मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार. दीज आर डिफॉर्म्ड बार्स. इनको डिफॉर्म किया जाता है. डिफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा TMT बार देखा, थर्मो मैकेनिकली ट्विस्टेड बार. इसमें कुछ
ट्विस्ट होती है, आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि ट्विस्ट किया हुआ है। वो ट्विस्ट क्यों किया होता है? बेसिकली आपको पता है द माइल्ड स्टील, अगर आप माइल्ड स्टील की डिजाइन करते हो तो माइल्ड स्टील का कर्व आपको थोड़ा बहुत याद होगा, मैंने 100 में भी पढ़ाया था आपको, किस तरीके से कर्व जाता है, देन इट गो लाइक दिस, देन इट्स गो लाइक दिस, देन इट्स गोइंग लाइक दिस। ये जो पोर्शन होता है दिस इज द प्लास्टिक पोर्शन, यहाँ पे ये ईल्ड कर जाता है बट टूटता नहीं है। टूटता कब है? टूटता का यहाँ जाके, मतलब ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमने अनयूटिलाइज छोड़ दी होती है, बिकॉज द स्ट्रक्चर is already having this particular strength and now you are fixing the value of strength to be this। आप यहां तक डिजाइन करते हो तो ये सब वेस्ट हो गया होता है, तो आप क्या करते हो, स्टील को लेके उसको हीट अप करते हो और कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करते चले जाते हो, ट्विस्ट करते चले जाते हो। when you will keep on twisting the steel then the steel will reach this portion, एक पॉइंट ऐसा आता है that the steel will reach this portion, ये सारा पोर्शन कवर हो जाता है। जब ये सारा कवर हो जाता है तो इस पॉइंट पे लाके आप उसे कूल डाउन कर देते हो। when you cool down the particular steel after reaching this particular portion of D, now if you will apply the load again over the steel then the steel will start gaining strength from here। अब वो यहां से स्टार्ट होगा कर, इसका मतलब इतना स्ट्रेंथ तो उसके अंदर ऑलरेडी रिजर्व हो गया, सर्व हो गया, उसके अंदर सेव हो गया, और वो अब यहां से स्टार्ट करेगा अपना स्ट्रेंथ गेन करना जब भी आप उस पर लोड लगाओगे। इसको बोलते हैं टीएमटी, थर्मो मैकेनिकली ट्विस्टेड बार। जब आप कूल कर देते हो तो उसका आउटर पोर्शन हो जाता है हार्ड और इंटरनल पोर्शन हो जाता है सॉफ्ट, विच ऑल्सो इंक्रीजेस द डक्टिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर स्टील बार। समझ में आ रहा है? HYSD bars are the deformed bars in which you deform the bars in order to overcome the plastic portion so that you can use the unutilized strength of the steel from the strain hardening region. This is known as thermomechanically twisted bars. Also, this will increase the bonding between the steel and the concrete because of that twist. माइल्ड स्टील की अगर आप बात करते हो तो माइल्ड स्टील को डिफाइन किया जाता है, माइल्ड स्टील को अगर आप बात करते हो तो माइल्ड स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, जो फाइनल उसकी स्ट्रेंथ होती है, दैट इज Fy इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आप बात करते हो HYSD की तो इसकी Fy होती है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे भी परमिसिबल अलग है, कैरेक्टरिस्टिक अलग है, जो आपके सामने लिखा है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। If you want to see the permissible values, then the permissible value is sigma st for both of these is, this is 140 Newton per mm square and sigma st for this is 230 Newton per mm square. It means that in steel also, if you are like designing for permissible values, then you have to fix the value to 140, but टूटेगा कब जाके 250 पे, टूटता इसलिए है नहीं। Similarly, if you are designing for HYSD bar, then the value will be 230 with the permissible stress and the final characteristic stress will be 415, which is the final value of strength for the steel. This is the concrete and the steel. Depending upon the values, you can relate them with the relations. Okay. There are certain assumptions also which you have to like remember before analyzing. Now, before those assumptions, let's understand the different methods of analysis and designing. Different methods of analysis and designing. देखो गेट या ES या SSC ऑब्जेक्टिव में they will only ask analysis part. Design cannot ask, they cannot ask design because design के अंदर answers are different. Every designer will create his own design. That's why the analysis is fixed, but the design is different. So exam में they will ask only analysis part for objective. For conventional we go for design also. एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, एनालिसिस मींस दे विल प्रोवाइड यू विद अ सर्टेन स्ट्रक्चर एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द कैपेसिटी और द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच इज गिवन टू यू। द एनालिसिस कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड। फर्स्ट इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अनदर इज द लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड, working stress method and the limit state method. Now, what is working stress method and what is limit state method? Now, working stress method is the method which works upon actual loading condition. Limit state method is the method which works on imaginary condition. Working stress method is that method which is basically the elastic method for design. Elastic. It means that you will fix the particular permissible value. परमिसिबल वैल्यू की बात करते हो आप, यहाँ पे परमिसिबल वैल्यू फिक्स करके यू विल डिजाइन फॉर दोस परमिसिबल वैल्यू। इन लिमिट स्टेट यू विल नॉट गो फॉर परमिसिबल, यू विल गो फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू एंड यू विल फिक्स द लिमिट टू सच एन एक्सटेंट दैट लिमिट कैन नॉट बी एवर अचीव्ड, व्हिच मींस दैट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वर्किंग स्ट्रेस की बात कर रहे हो एंड 10 kg लोड आ रहा है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिजाइन फॉर 10 kg, बात खत्म हो गई। 10 ना आ रहा है उतने की डिजाइन कर दो। वर्किंग मींस एक्चुअल लोडिंग कंडीशन। लिमिट स्टेट, if the load is coming 10 kg, you will not design for 10 kg. What you will do, you will design for 20 kg.
और लोड कितना आएगा 10 kg. It means that you have designed the structure for 20 kg. Load can never exceed 10 kg. It means that the structure can never fail because you have designed the capacity of the structure to be 20 kg. But in this case, if you are designed for 10 kg only and load is coming 10 kg, the load exceeded 10 kg, then the structure will fail. It means that the limited state method is such a method which will fix a limit to such an extent that this limit can never be achieved under any situation, and you will design the structure with that particular factor of safety. But in case of working stress method, you have to design the structure with the working loading condition, which is our actual loading condition. The limit states can be classified into two different types. The limit states can be classified into two different types. First is limit state of collapse. Limit state of collapse. And next is limit state of serviceability. Limit state of serviceability. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करते हैं. कोलैप्स में टूट जाना. सर्विसिबिलिटी मतलब सर्विसिबिलिटी खत्म हो जाना, काम करने की एबिलिटी खत्म हो जाना. सर्विस वर्क एबिलिटी सर्विसिबिलिटी. इट मींस दैट इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, द कोलैप्स कैन बी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, दिस कैन बी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, दिस कैन बी ड्यू टू शियर फोर्स, दिस कैन बी ड्यू टू एक्सियल फोर्स. इन्हीं की वजह से हो सकता है, एक्सियल लोड की वजह से. बट इफ यू गो फॉर सर्विसिबिलिटी, दिस कैन बी ड्यू टू क्रैकिंग, this can be due to deflection, this can be due to buckling, this can be due to corrosion. It means that सर कोलैप्स मतलब टूट जाना. स्ट्रक्चर की टूटने की लिमिट किस पे लगाओगे? बेंडिंग पे लगाओगे, शियर पे लगाओगे, एक्सियल पे लगाओगे, ये चीजें एक्सीड ना हो पाए. सर्विसिबिलिटी मतलब जैसे कोई कॉलम खड़ा है, द लोड इज एक्टिंग ओवर द कॉलम गेट बकल्ड, मुड़ जाता है कॉलम. इफ द कॉलम गेट बकल्ड देन द कॉलम विल स्टॉप वर्किंग. टूटा नहीं है कॉलम, बट कॉलम का जो काम होता है तो ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द बीम टू द फुटिंग, वो नहीं कर पा रहा. इट मींस दैट इट हैज अटेन्ड इट्स लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. इट मींस दैट द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन एक्चुअल कंडीशन. होगा ना एक्चुअल कंडीशन पे बेस्ड. क्यों होगा एक्चुअल कंडीशन पे बेस्ड? क्योंकि एक्चुअल में दिख जाएगा कि मुड़ गया, कितने लोड पे मुड़ गया, आपको पता होगा कितने लोड पे वो बेंड किया या बकल किया. It means that the limit state of serviceability is basically the actual state of serviceability which is depending upon different cases, जिसकी वजह से काम करना बंद कर जाएगा. बकलिंग हो गया, दिक्कत हो जाएगी, डिफ्लेक्शन, क्रैक, इन सब की वजह से टूटा नहीं है स्ट्रक्चर, बट काम करना बंद कर दिया. बट इन फोर्सेस की वजह से द स्ट्रक्चर कैन कोलैप्स. दैट व्हाई दीस आर द लिमिट स्टेट्स ऑफ कोलैप्स. फाइन. So this is the basic theory which you at least know before starting anything. Now, first of all, we'll start from the working stress method. The first method that we'll be dealing with the working stress method. And working stress method, first of all, let's start with the assumptions. Assumptions which are involved. The very first assumption is that the plane section before bending remain plane after bending. It means that the strain diagram will always be linear. It also means that the rectangular section will remain rectangular after the bending. कभी कभी क्या होता है, अगर आपके पास बीम है तो बीम में रेक्टेंगुलर सेक्शन एक्चुअल में रेक्टेंगुलर नहीं रहता है, थोड़ा बहुत शेप में वेरिएशन आता है. बट you will consider this assumption that the plane section before bending will remain plane after bending. You will consider, it means that the basic case is that the strain diagram is always linear. Strain is always linear. It means the strain diagram will always having a shape like this. It was always having a shape like this. Strain diagram की shape हमेशा ऐसी होगी. It will never be changed. It will always be like this only. This is the strain diagram will always be linear. This is the strain diagram. This is the first assumption. The second assumption is that the tensile stresses are taken by the steel only. Tensile stresses are taken by the steel only. It means that the concrete cannot take any tensile stress. Whatever the stress is present, it can be handled by the steel only if the nature of the stress is tensile. Compressive stresses it can take. मतलब जहां भी टेंशन आ रहा है वहां कंक्रीट कुछ नहीं कर सकता. वहां पे जो भी करेगा तो स्टील करेगा, ऐसा assumption मान के चलते हैं. थर्ड, द यंग्स मॉडुलस रिमेन कांस्टेंट. पूरी बीम का, पूरे स्ट्रक्चर का यंग्स मॉडुलस वेरी नहीं करेगा, इट विल बी कांस्टेंट. द फोर्थ assumption इज द स्टील शुड बी फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेसेस. इनिशियल स्ट्रेसेस, स्टील जो होगा वो इनिशियल स्ट्रेसेस से फ्री होना चाहिए. उसमें इनिशियल स्ट्रेसेस जैसा कुछ भी ऐसा ना हो कि पहले से थर्मल स्ट्रेसेस उसके अंदर हो, एकदम खाली होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. These are the assumptions which we consider generally for the design purpose, the analysis purpose. Now we'll start the analysis in the next class, but अभी आप थोड़ा सा specifications देख लो, how to define a particular beam. अगर आपके पास you have a beam like this is your beam.
This is your beam. In this particular beam, what we have different reinforcement. Let's say this is the reinforcement which we have. These are the reinforcement which we have. ये आपने reinforcement bar दे रखी. These are the bars which we have provided. नीचे क्यों दिया है? क्योंकि आपका अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आएगा तो बीम को सैग कराने की कोशिश करेगा. जब वो सैग कराने की कोशिश करेगा तो उस बीम के अंदर ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा. और स्टील कहां देनी होती है? जहां पे टेंशन होता है. इट मींस दैट दिस विल बी द reinforcement which we have provided. ये हो गया reinforcement. बीम किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, आप जानते हो. वो बीम रोटेट जिस एक्सिस के अबाउट करती है उसे बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस. दैट इज न्यूट्रल एक्सिस. इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एक डायमेंशन होगा. लेट्स से द डायमेंशन इज b by d. दिस इज कैपिटल B by कैपिटल D इज द टोटल डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन. दिस इज कैपिटल B by कैपिटल D. दिस इज द टोटल डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन. There is effective dimension also. Effective dimension means if you will consider the depth from the top till the center of this particular portion. From the top till the center of this particular portion, this is denoted by small d, which is the effective depth. This is the effective depth. This is the total depth. This is the total depth. अगर आप सेंटर से नीचे तक का पोर्शन लेते हो, दिस इज नोन एज इफेक्टिव कवर. इफेक्टिव कवर ये दिया जाता है इरोजन वेदरिंग वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए कि कहीं से टूट ना जाए. तो थोड़ा पोर्शन होना चाहिए, अदरवाइज बाहर निकल सकती है. ऐसा ना हो यहां से टूट जाए. अगर नीचे दे दोगे एकदम से तो हो सकता है बाहर ही निकल जाए. बट मेन पोर्शन तो बाहर का ही, क्योंकि बाहर को टेंशन हैंडल करना है. अगर आप इसके बेस से लेते हो नीचे तक का पोर्शन, दिस इज नोन एज क्लियर कवर. This is known as clear cover. There is a difference between effective cover and clear cover. Okay, effective cover is from the CG. Clear cover is from the base of the reinforcement. Fine. If you want to denote these bars can be denoted like this is 4 number of bars. You can denote it 4. If diameter is 60 mm, this is 16 mm, or you can say that just directly write it like this: 4, 16, 5 bars. It means these are 4 bars which is having 16 mm size. Generally, we consider mm as the main dimension in India. mm के base पे सबको decision होता है. This is the actual depth of neutral axis, which is denoted by XA. Actual depth of neutral axis. Neutral axis is what axis? Neutral axis is that axis above which there will be the stresses are of opposite nature. For example, here will be compression and here it will be tension. Tension है, इसके नीचे steel लगा हुआ है. It means that this will be the axis along which the rotation is taking place. If you will draw the stress diagram, then the stress diagram will be somewhat like this along this particular axis. This diagram will always go till steel only. स्टील तक की बात कर रहे हैं हम लोग. स्टील के नीचे जो लगा हुआ वो वैसे ही यूजलेस. उसके नीचे कंक्रीट है. हमें अजम्पशन माना है कि जो भी कुछ होगा वो सारा कुछ होगा स्टील के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि टेंशन सिर्फ एक ही चीज को लेना है, वो है स्टील. और स्टील को ही टेंशन अगर लेना है तो कंक्रीट का कोई मतलब नहीं है. इट मींस दैट दिस विल बी द केस. थोड़ा सा छोटा हो गया, लेट्स इंक्रीज इट और डिक्रीज इट. ये दिस विल बी द केस. इस तरह कुछ केस बन रहा होगा. दिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस. इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा दिस विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस. यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा दिस विल बी द टेंसाइल स्ट्रेसेस. टेंसाइल स्ट्रेसेस कंक्रीट के लेने नहीं है, तो सिर्फ जो इफेक्टिव पोर्शन होगा वो आपका यही वाला पोर्शन होगा विच यू हैव टू कंसीडर. उसको डेप्थ में पढ़ेंगे भी कैसे होता है, अभी इतना समझ लो. दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस in bending because you have applied the bending moment. It means that this compressive stress can be denoted by sigma CBC. Sigma CBC is maximum bending stress, bending maximum compressive stress in bending. This is the sigma ST, which is the maximum tensile stress. किसके अंदर? स्टील के अंदर. कंक्रीट की बात नहीं कर रहे हम लोग अभी. This is in the steel. This is in concrete. Maximum compression. This is maximum tension जो bottom पे present हो रहा है. This is maximum compression जो टॉप पे प्रेजेंट हो रहा है, टॉप मोस्ट स्ट्रेस पे. कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर या न्यूट्रल एक्सिस से नीचे. किस रिलेशन के साथ वेरी करता है? आपको सो में मैंने बताया था, सिग्मा अपॉन y दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट व्हिच वी हैव अप्लाइड डिवाइडेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस द बॉडी इज प्रोवाइडिंग इज इक्वल टू E into 1 by R. E is the Young's modulus. This is the basic relation. Sigma upon y is equal to m upon I is equal to E upon R. तो सिग्मा बेसिकली सिग्मा इज इक्वल टू m upon I into y के साथ वेरी कर रहा है सिग्मा डायरेक्टली, क्योंकि m आपने ऊपर से लगाया है, I बॉडी दे रहा है. दिस इज द केस. दिस इज जनरल स्पेसिफिकेशन. फाइन. इसको एक बार रिवाइज कर लेना. On the next class we will start with the analysis of a singly reinforced beam by WSM. Then we'll go over doubly. गेट के अंदर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे इसके अंदर. द रीजन इज दैट कि वर्चुअल कैलकुलेटर है, तो कॉन्सेप्चुअली आपको समझ रहा है बस, बेसिकली वही सब पहुंचाता है. ठीक है. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. इट्स AS पंडित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.